Swayam Prabha. Digital India. Educated India. Welcome to session 19 of the course. We are very close to the end of quarter 2. However, in between we have faced difficulties, problems. Some of our students across the net have difficulty in solving some of the assignments. So today, before going into the subject matter of assignment lesson 19, I will illustrate some of the assignment problems. So, framing sentences in certain patterns is not very difficult as you think. So, for this pattern, we will show you some example. One example of this. Anand, come. Against type, I have written positive, negative, interrogative query. So, tick one of them, the kind of sentence that you want. Okay. Now, tense, which tense you want? Give a subject. Ramesh. Give a verb. Go. And what details? Where, what, when, why, that kind of details you ask here. No, you ask. Right where? Another question. When? Another question. Beautiful. Go back. Arun Jyoti. Give him a sentence in present, positive sentence in present with Ramesh as a subject, go as the verb, and additional details of this kind. You write it. Intelligent. So he asked a question. This portion I will cut anyway, don't worry. After he starts writing and before he finishes writing, we will cut that part. Ramesh goes to the market every day to buy vegetables. Beautiful. You have got the sentence you wanted? So that's done. It's a positive sentence, goes. Present, goes. Verb, go. Okay? Ramesh is a subject. Details of where? To the market. When? Every day. And why? To buy vegetables. Everything has come? Okay. Rub off this sentence. And rub off that positive present tick marks. Rub off that those tick marks. Rub off whatever data Anand gave you. These 3 questions also. And rub off the sentence. Fine. Now give a problem to Suyash. Tick mark a type. Tick mark a tense. Of, yeah. And write a subject. Mohan. Can I change the subject? Okay, then take this duster. Where is the duster? You have. He. Okay, write they. Give a verb and some details that you want. Come. Write another question and don't write why. Write something else. No, verb B, not V, B. Give some proper verb.
remove that. Give. Okay, good. Yeah, come. They will not give the vegetables to the villagers after 6 p.m. in the market. Sentence is right. Okay, you move a little, let it be visible. Okay. They will not give the vegetables to the villagers after 6 p.m. in the market. Sentence is grammatically right, but perhaps people are not very happy. Anyway, fine. Happy or not, it is a sentence. Okay. So now rub off this sentence. And rub off those tick marks. Remove the subject. And yes, yes, subject also, okay, and against verb put a cross mark or write B, okay, yeah, write B, B will be the verb, okay, and set a problem for this guy, okay, it will be in B only. Tick mark now, fine, fine, give a subject, and put some details, some questions. Whom is meaningless with B, write how. Okay. 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 Was Rakesh okay? Was Rakesh there in the office in a good shape or good state or good mood after 5 p.m.? After 5 p.m. he doesn't like to be in the office to begin with, so you are not sure whether he was in good mood. Okay. So you got a sentence. Now set another question for somebody else. Remove the details of this. Yeah. Just a minute. When you ask for a sentence with query, you give a question. Which question you want? If you ask when in the query, say with query I put a colon, so we will need which query? What? Okay, so what? And but then you cannot have, there are troubles in this. Okay. When will be fine. So remove when from here and put when here. No, try to connect whatever you supply as the answer to how, try to connect that with was injured, then it will be a perfect example. When was Anil injured in the market so badly? Sentence is fine, it is answering all the things, okay, but it's not a great natural sentence, because how in all kinds of sentences will not make very good sense. But there may be sentences which naturally arise, which happen to be in this frame. Okay, that also can happen. But to find a suitable answer to this, I mean, it is possible. Okay, it is not very difficult. Okay. No, this is fine. When was Anil so badly injured in the market? This will sound a little more natural, right? So, you see, this one pertains to assignment 15. The previous one was similar to assignment 13, and the earliest two are similar to assignment 11. Okay. So, these kinds of sentences to order can be framed. So, it is not that difficult. Okay. So, now we
start the subject matter of today's lecture. Akshat, can you read out these sentences? I have a book. मतलब मेरे पास एक किताब है. okay, You have courage. तुम्हारे पास हिम्मत. correct. तुम्हारे पास हिम्मत है, थोड़ा जोर से बोलो. रमेश has an aunt. रमेश के पास रमेश की एक बुआ है. बुआ है, चाची भी हो सकती है. ओके, Does he have a car? क्या उसके पास एक कार है? ठीक है. So as you notice, have is a particular typical kind of verb, the meaning of which is not the same everywhere. Okay, when you have courage, you have it inside you, is a part of you. Okay, part of your personality. On the other hand, when you have a book, then you don't have it inside you. You might have it near you, or you might have it at your home, though you are sitting in the class here. Okay, so this does not mean that you have it with you. Okay, Ramesh has an aunt doesn't mean that he has his aunt the way he has his book. Okay, the aunt may be far away somewhere. Okay, on the other hand, does he have a car can have both meanings, whether he owns a car, whether he is the master of a car, whether there is a car registered in his name, or in other sense, whether he has a car nearby outside the door from where he can give you a lift. Okay, so both meanings are possible, and in different contexts they will mean different things. Okay, Durga, read out these. We do not have a football. मतलब हमारे पास एक भी फुटबॉल नहीं है. हमारे पास फुटबॉल नहीं है. ए से कोई मतलब नहीं है. ओके, Do you have unity? क्या तुम्हारे पास एकता है? क्या तुम में एकता है? देखो हैव का मतलब जो है इधर उधर जाता है. ठीक है, Children have many ideas. बच्चों के पास कई विचार हैं. बच्चों के पास बहुत सारे विचार होते हैं. ठीक है, What means do they have? मीन्स मतलब साधन, उपाय. उनके पास क्या उपाय हैं? उनके पास क्या उपाय है? ठीक है, आई हैड हाउसेज इन 3 cities. 3 शहरों में मेरा घर है. 3 शहरों में मेरे घर हैं. ओके, अब पूछा जा रहा है कौन कौन से शहर हैं वो. Where did you have them? अच्छा, ये 3 शहरों में मकान है नहीं थे. ठीक है, Where did you have them? हमारे पास वो कहाँ थे? हाँ, वो सारे मकान कहाँ थे. ठीक है, ओके. यहाँ अब एक मकान की बात हो रही है. हमारे पास बालकनीज थी. एक्चुअली ये बड़ा गजब है. इसका हिंदी में इंटरप्रेट करेंगे, वी हैड बालकनीज इन देम, तो उसका मतलब निकलेगा उन मकानों में बालकनी भी थे. ठीक है, अब देखो, वी हैड द हाउसेज एंड एक्चुअली इट इज़ द हाउसेज विच हैड बालकनीज. ओके, लेकिन चूंकि घर हमारा है, उस घर का है बालकनी, तो बालकनी भी हमारा ही हुआ. ठीक है, ओके. क्या तुम्हारे पास फूलों के गमले थे? हाँ, इसका मतलब है कि उन बालकोनीज में फूलों के गमले थे कि नहीं. ठीक है, तो चूँकि मेरी काबिलियत, मेरा अक्ल जो है वो मेरा है, और मैं खुद IIT का हूँ, इसलिए मेरा अक्ल, मेरी कैपेबिलिटीज़ जो है वो IIT का है. दैट इज़ आइडिया. ओके, ओके, आगे. रानी के पास 2 नई ड्रेसेस. तुम पहले अंग्रेजी पढ़ के सुनाओ, उसके बाद उसका मतलब बताना. रानी हैड 2 न्यू ड्रेसेस. हाँ, रानी के पास 2 नई ड्रेसेस थी. ठीक है, उसके बाद इधर. दे हैड 2 पॉकेट्स ईच. उनमें 2 जेबें थी. उनमें 2 जेबें थी. ठीक है, नाउ शी हैड सम मनी इन पॉकेट. उसके पास कुछ पैसे थे उन पॉकेट में. उसके पास पॉकेट में कुछ पैसे थे. ठीक है, डिड द पॉकेट्स हैव कवर्स? क्या पॉकेट में कवर थे? हाँ, ठीक है. इधर उधर खिसक रहा है मतलब, राइट. हैव का मतलब इधर उधर खिसक रहा है. हैव बहुत ट्रिकी वर्ब है. ओके, आनंद. I will have a job.
मेरे पास एक जॉब होगी. मेरे पास एक नौकरी होगी. नौकरी. ठीक है. वी विल हैव अ पार्टी. हम लोग पार्टी करेंगे. हम लोग पार्टी करेंगे. कहाँ चला गया मतलब. ठीक है. यू विल हैव द प्रॉपर्टी. तुम्हारे पास जायदाद होगी. बिल्कुल सही. यू पीपल विल हैव फन. तुम लोग मज़े करोगे. बिल्कुल सही. मनोज विल हैव हिज चाइल्ड. मनोज विल हैव हिज चाइल्ड. मनोज को बच्चा होगा. इसका दोनों मतलब निकल सकता है. इट्स लाइक इसका दोनों it's मतलब a हो सकता है. bilateral. बिल्कुल सही. मैं जानता था कि यहाँ पर कंफ्यूजन का स्कोप है. ठीक है. मनोज विल हैव हिज चाइल्ड. मनोज अभी यहाँ रहता है. ठीक है. उसका बच्चा जो है वो ननिहाल में है. ठीक है. शिकागो में. बात ऐसी तय हुई है कि बच्चा मनोज के पास आ जाएगा. देन इट विल बी सो नाइस. मनोज विल हैव हिज चाइल्ड विथ हिम. ये भी हो सकता है. या ऐसा हो सकता है कि मनोज की वाइफ प्रेग्नेंट है. ठीक है. अगले महीने बच्चा होने वाला है. सो मनोज विल हैव हिज चाइल्ड. ये भी पॉसिबल मतलब है. ठीक है. इसके बहुत सारे मतलब निकल सकते हैं. कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक मतलब निकलेगा. ओके. who will have the chance. ना ये He will have a happy time. शिकागो से आ जाएगा बच्चा तब भी मज़ा आएगा उसको. अच्छा लगेगा. और नया बच्चा होगा अच्छा समझ. 0 एज का, वो भी ठीक रहेगा. ठीक है. ओके. Who will have the chance. किसके पास मौका होगा. हाँ, मौका किसको होगा. जैसे कि एक बंदे को हमें भेजना है. तुम लोगों में से किसी एक को हमको भेजना है रिप्रेजेंटेटिव बना के अमेरिका. चांस किसको मिलेगा. ठीक है. How will they have it. वो कैसे करेंगे. हाँ, वो कैसे करेंगे या वो कैसे हासिल करेंगे. ठीक है. तो हैव एक ऐसा वर्ब है जिसका कि इधर उधर करके कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक बहुत सारा मतलब निकल सकता है. ठीक है. और हैव का एक खास यूज़ है सपोर्ट के तौर पे, जिसको हम लोग अगले क्वार्टर में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे. ओके. यस. कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करेगा. यस. बहुत तरह से किया जा सकता है. हाँ. हाँ, उसको खुशियों के दिन आने वाले हैं टाइप से. काफ़ी शिफ्ट हो जाता है ट्रांसलेशन उसका. ओके. सो नाउ वी हैव द fifth list of verbs which has this have. Okay. So just check and ensure that you know all these verbs and you have no confusions regarding the 5 forms of these verbs, because these are very common verbs which people must know, these 10 and these 10. सिंक और ड्राउन. सिंक का मतलब और ड्राउन का मतलब में फ़र्क क्या है. जब जहाज़ डूबता है तो सिंक होता है. बोट डूबता है तो सिंक होता है. जब आदमी डूबता है तो ड्राउन होता है. ठीक है. गाय डूबे तब भी ड्राउन ही होगा. ओके. ऑर्डर, आदेश देना. ठीक है. बहुत सारा होता है. लाइट का 2 टाइप का फॉर्म चलता है. लिट भी होता है, लाइटेड भी होता है. ठीक है. लिट मतलब प्रकाशित और लाइटेड मतलब जलाना. ओके. जलाया गया. ओके. या जलाया. ओके. बहुत तरह के सेंटेंसेस हम लोगों ने इस बीच पढ़ लिए. थोड़ा समराइज करते हैं. अक्षत. आई कॉल मतलब मैंने बुलाया. नहीं, मैं बुलाता हूँ. मैं बुलाता हूँ. आई कॉल्ड मैंने बुलाया था. मैंने बुलाया था. परफेक्ट. इधर आ जाओ. आई एम कॉल्ड मुझे बुलाया गया. करेक्ट. आई वॉज कॉल्ड मैं बुलाया गया था. करेक्ट. मैं बुलाया गया था या मुझे बुलाया गया था. ठीक है. आई एम कॉलिंग मैं बुला रहा हूँ. ठीक. आई वॉज कॉलिंग मैं बुला रहा था. वेरी गुड. आई एम बीइंग कॉल्ड मुझे भी बुलाया गया था. मुझे बुलाया जा रहा है. जा आई वॉज बीइंग कॉल्ड मुझे बुलाया जा रहा था. परफेक्ट. ये साइड एक्टिव में, ये साइड पैसिव में. ऊपर वाला लाइन सिंपल में, नीचे वाला लाइन कंटिन्यूअस में. ठीक है.
बी प्लस फिफ्थ फॉर्म। हर लाइन में, हर पार्ट में पहला वाला प्रेजेंट में, दूसरा वाला पास्ट में, ठीक है। ये सारे के सारे सेट पॉजिटिव सेंटेंसेस का है। दुर्गा। आई डू नॉट कॉल, मैं नहीं बुलाता हूँ। ठीक, आई डिड नॉट कॉल, मैंने नहीं बुलाया था। करेक्ट। आई एम नॉट कॉल्ड, मुझे नहीं बुलाया गया है। मुझे नहीं बुलाया गया है, करेक्ट। नहीं तो I- मुझे नहीं बुलाया गया जाता है भी चलेगा। जब तुम्हारे घर में पार्टियां होती है तो मुझे नहीं बुलाया जाता है, ठीक है। आई वॉज नॉट कॉल्ड, मुझे नहीं बुलाया गया था। करेक्ट, आई एम नॉट कॉलिंग, मैं नहीं बुला रहा हूँ। करेक्ट। आई वॉज नॉट कॉलिंग, मैं नहीं बुला रहा था। तुम आराम से ये भी बता सकती हो कि मैं नहीं बुला रही हूँ और मैं नहीं बुला रही थी, ठीक है। आई एम नॉट बीइंग कॉल्ड, मैं मुझे, हाँ मुझे नहीं बुलाया जा रहा है। करेक्ट। आई वॉज नॉट बीइंग कॉल्ड, मुझे नहीं बुलाया जा रहा था। परफेक्ट, ओके। इसमें भी ये ब्लॉक एक्टिव का, ये ब्लॉक पैसिव का। पहला लाइन प्रेजेंट, पहला लाइन सिंपल, दूसरा लाइन कंटिन्यूअस। लाइन में, ब्लॉक में पहला सेंटेंस प्रेजेंट, दूसरा सेंटेंस पास्ट। तो हम लोग 3 डायमेंशन में काम कर रहे हैं, ठीक है। एक्टिव पैसिव, प्रेजेंट पास्ट और पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। प्रेजेंट पास्ट की जगह फ्यूचर भी जोड़ सकते हैं और पॉजिटिव नेगेटिव की जगह पे सवाल भी जोड़ सकते हैं। अगले में सवाल ही जोड़ेंगे। यस, क्या मैंने बुलाया? तुम पहले अंग्रेजी पढ़ के सुना दो। डू आई कॉल, क्या मैंने बुलाया? क्या मैं बुलाता हूँ? मुझे जब ज़रूरत पड़ती है मदद की, क्या मैं तुम्हें बुलाता हूँ? डू आई कॉल यू? ओके, डिड आई कॉल, क्या मैंने बुलाया था तुम्हें? करेक्ट। तुम्हें की ज़रूरत नहीं है। एम आई कॉल्ड, क्या मुझे बुलाया गया था? बुलाया गया है। अगला ये है, मुझे बुलाया गया था। हाँ, वाज आई कॉल्ड, क्या मुझे बुलाया गया था। अब दूसरे अगले लाइन पे आओ। क्या मैं बुला रहा हूँ? एम आई कॉलिंग, क्या मैं बुला रहा हूँ। क्या मुझे बुलाया जा रहा है? एम आई बीइंग कॉल्ड। करेक्ट, वॉज आई कॉलिंग, क्या मैं बुला रहा था? करेक्ट, वॉज आई बीइंग कॉल्ड, क्या मुझे बुलाया जा रहा था? परफेक्ट, ठीक है। इस ब्लॉक में एक्टिव, इस ब्लॉक में पैसिव। पहला लाइन सिंपल, दूसरा लाइन कंटिन्यूअस, और वैसे ही पहला सेंटेंस प्रेजेंट, दूसरा सेंटेंस पास्ट, फ्यूचर भी जोड़ा जा सकता है। अब अंतिम, अब क्वेश्चन में क्वेरी जोड़ते हैं, एक्सप्लिसिट क्वेश्चन। वाई डू आई कॉल, राइट, मैं क्यों बुलाऊं? मैं क्यों बुलाता हूँ। वाई डिड आई कॉल, मैंने क्यों बुलाया था? करेक्ट, वाई एम आई कॉल्ड, मुझे क्यों बुलाया गया? करेक्ट। या मुझे क्यों बुलाया जाता है भी चलेगा। वाई वॉज आई कॉल्ड, मुझे क्यों बुलाया गया था? करेक्ट, वाई एम आई कॉलिंग, मैं क्यों बुला रहा हूँ? करेक्ट, वाई वॉज आई कॉलिंग, मैं क्यों बुला रहा था? वाई एम आई बीइंग कॉल्ड, मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? वाई वॉज आई बीइंग कॉल्ड, मुझे क्यों बुलाया जा रहा था? परफेक्ट। तो बहुत सारे हो गए, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, क्वेरी भी हो गया, और फिर जो है एक्टिव पैसिव में 2 तरफ से हो गया। एक में बुलाने का काम मैं करता हूँ और दूसरा जो है उसमें मैं बुलाया जाता हूँ या नहीं बुलाया जाता हूँ, ठीक है, कुछ भी हो। और प्रेजेंट पास्ट भी हो गया, फ्यूचर भी जोड़ सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में आप जानते हैं कि कुछ केसेस ऐसे हैं जो कि नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा? इसमें से कौन सा टाइप का सेंटेंस फ्यूचर में नहीं आ सकता है? कंटिन्यूअस पैसिव, कंटिन्यूअस पैसिव, ये सब नहीं चलेगा, ठीक है। ये आई एम बीइंग कॉल्ड, आई वाज बीइंग कॉल्ड, प्रेजेंट और पास्ट तो हो गया, इसी का ठीक ठीक फ्यूचर नहीं होता है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ भी जो इस ब्लॉक का जो है ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, ये सब का फ्यूचर नहीं होगा, ठीक है। ढंग से हम लोग समराइज़ करते हैं कि अभी तक 2 क्वार्टर्स में जो है हम लोगों ने कितने टाइप्स के सेंटेंसेस सीखे हैं। पता चलता है कि 46 टाइप्स के सेंटेंसेस सीखे हैं। जैसे क्वार्टर 1 के शुरू में, अंत में, क्वार्टर 1 के अंत में, एट द एंड ऑफ क्वार्टर 1 we summarized all the kinds of sentences that we studied in that quarter 1. There were only 14 types with a total of 18 forms.
now we have large number of types and many more number of forms. First, at the top we have active passive, okay, like I will give, I will be given. So, 2 types. Okay. Inside that we can have present, past, future, like he goes, he went, he will go. Okay. So, 3 types. Inside that, till now we have studied simple sentences and continuous sentences. Continuous sentences we built by be plus fifth form of a verb. So, you ate, you were eating. In that, so out of these 2 types that we have studied till now, we can have 4 different types: positive, negative, interrogative, query. A quick comparison: they are crying, they are not crying, are they crying, why are they crying? Okay. 4 kinds. Okay. Apart from that, 2 sentences we studied in the beginning. One is an order or request, read this book or please read this book, and its negative, do not read this book. Okay. So, these are 2 additional kinds which stay outside this whole theme. Okay. So, 2 into 3 into 2, all these are fine except that you do not have passive, future, continuous. So, out of this subtract 1. Okay. So, 2 into 3 into 2, 12 kinds, but actually 11 kinds, because this you do not have. Okay. The front face is simple, the rear face is continuous, the left face is present, the right face is future, the middle face is past, okay, and then the lower face is passive, the upper one is active. So, this corner is invalid in English, that is, you cannot have future continuous in passive. Okay. So, out of these 2 by 2 by 3, 12 corners, you have one corner which is invalid. So, get rid of that, you get 11. So, 11 types of sentences in positive, negative, interrogative with and query. You have 11 into 4, 44, and then these 2 extra which stay outside. So, we have 46 types. We could have got full 50 types, but there is no future continuous in passive. So, 4 are lost. Okay. So, these many types we have studied by the end of the second quarter. Okay. Okay. Today we will omit the tutorial of active passive conversion, because we have already done some of it in the previous session, and we still have 2-3 minutes left in hand. So, if you have any quick questions, you can ask. Yes. Sir, sink and down. Drown. Yeah. Sorry, drown. Drown. Yeah, sink is mostly used for inanimate objects. That Correct. you mean? Even for ideas, like the idea or the. Not always. Our idea of English proficiency program may drown in a lot of other ideas. That is possible, because ideas are sometimes almost alive, you see. So, I mean, these are grey areas. Wonderful. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Setting something on fire, right? That's right. Yes. And lit is like making something flooded with lights or something in that sense. Yeah, you are giving it. The arena was lit up with his presence, something of Yeah, that sort. yeah, certainly. Yes. But that is not lighted up. No, 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 no. Not lighted up. Okay. Okay. Anything else? Okay. So, we stop here, and next session, session 20, will be our last session of quarter 2. Okay. Thank you.